से पानी में छोड़ते। दे, छोड़े। पानी में तैरेगी कागज की नाव, माउली आएगी बाबा के गांव। डियर माऊ, बड़ी खूबसूरत है ये जगह, द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। एक मौसम ऐसा भी आता है यहाँ जब आधी रात को आसमां में सूरज चमकता है। उम्दा लोग हैं यहाँ पर। वसंत ऋतु की शुरुआत में ही ट्यूलिप खिलते हैं, रंगीन हो जाता है सब कुछ। मौसम के इस बदलाव का जश्न मनाते हैं लोग, धूप सेकने निकल पड़ते हैं। यहाँ के लोग और यहाँ की प्रकृति के बारे में कई बार लिखा है मैंने तुम्हें अपने खतों में। जब तुम यहाँ आओगी तो मेरी लिखी हुई ये बातें तुम्हें अलग मजा देगी। मैंने तुम्हें लिखे हुए खत तुम सिर्फ पढ़ोगी और किसी भी खत का जवाब नहीं दोगी। ये जो वादा मैंने तुमसे लिया था उसे निभाया है तुमने। अपनी हॉस्टल की खिड़की में खड़ी होकर मैंने ऐसा क्यों कहा, इस बारे में कई बार सोचा होगा तुमने। मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा, इस बात का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। एक और वादा चाहता हूं तुमसे, अभी मुझसे मिलने की जिद मत करना। वो दिन जरूर आएगा जब कुदरत हम दोनों को मिलाकर रहेगी, और वो दिन दूर नहीं। तुम बड़ी हो जाओ, अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर अपने आप तुम्हारे कदम पड़ेंगे इस जमीन पर। मेरे एक खत तुम्हारा साथ देंगे। सपने लेकर आया था मैं इस खूबसूरत देश में। इन खतों में मेरे सपनों के निशान हैं। ये निशान तुम्हें मुझ तक पहुंचाएंगे। तुम्हारा बाबा। Excuse me. Yes? Room number 33? Yes? In case you wanna extend your stay, you need to tell me now. I can't tell you right now. I can tell you tomorrow morning. I'm sorry, that's not possible. You have to tell me now. I have a booking waiting to be confirmed. Okay, here's what we can do. Tomorrow morning, when you leave for work, you check out, come back in the evening after finishing your work, and if a room is available, you can take it. But what if it's not? Well, then it's tough luck. यहाँ की हवाएं पढ़ना जानती है। मैंने अपने पैगाम तुम्हारे नाम कागजों पर लिखकर हवाओं के हाथ थमा दिए हैं। हवाओं का रुख अटल होता है, मेरे विश्वास की तरह। Good morning. Good morning. Excuse me? Can I keep my luggage in the clerk room? Yes. Yeah? Thank you.
This place? Yeah, sure. Hop in. How much is the charge? 800 crowns. 6,000 rupees? What happened? That's too much for me. Can you charge less? How much less? About half the price? Is that okay? What about if I drive you half the way? Is that okay? Are you making fun of me? Now, listen. You go 4 blocks that way, then 2 blocks left. Then you have a bus stop. Then you take a bus to Valhallavägen, close to stadium. And when you get there, you take a train or a bus to Roslagen. Is that okay? Okay, thank you. Thank you is not enough. I gave you good advice. Now you give me my consultant's fee. 5 crowns? Oh, I don't have that. I can only give you a thank you. Thank you. Excuse me? Is this bus going to Nortelia? No. No? Come here. Oh, hi. You're lucky. This gentleman is heading where you are, and he agreed to share the fare. Is it okay? Hop in. Thank you. Thank you so much. You want to eat something? Oh, no, I have my phone. Oh, thank you. You've come all the way from the city to the town. Surely you'll be going back. Of course, I have to go home, but I won't do it for half the price. If you want to ride to the city, you meet me here 4, okay? Okay. शिमला की पहाड़ी पर तुम्हारे हॉस्टल की खिड़की से क्या दोपहर ऐसे ही दिखाई देती है? छोटे शहर की खाली खाली सी दोपहर ऐसे में तुम्हारी याद आती है तो इमारतों के सरों से आसमां उड़ जाता है। Must ask you to wait 5 minutes, please. Hello. Hi. So, this man Yeah? in the photograph, it's Nachiket Raukar. Yes. The money used to come from this very bank. And may I ask you how you are related to him? I'm his daughter. And this is my mother, Anita Nachiket Raukar. And how can I help you? I'm trying to find my father.
Unfortunately, I have to tell you, this man in the photograph, it's not Nachiket Raukar, it's Stefan Nyborg. No, this is Nachiket Raukar. He's my father. Unfortunately, we have our guidelines and rules, and we are not allowed to give any information. It's very strict. This bank account has not been operated since the last 5 years. You may go to the Indian embassy. They will have the authority to give you more information. अब ठंड का मौसम लौटने को है। मैं अपनी दफ्तर की खिड़की से पिघली हुई नदी का बहाव देखता हूँ। माऊ, क्या तुम अब भी कागज की कश्तियां बनाती हो? I'm heading back to the city. Are you coming? I won't be able to pay the fare today. Besides, I have to give up my hotel room. I think I'll have to sleep outside today. I'll just take the last bus. Okay, as you wish. Bye-bye. Okay, half the price it is. Hop in. You know, you're a very lucky girl. And that is my bad luck. I couldn't find a passenger, so I would have to go empty from there. I guess half rate is better than nothing. Since you are in my car, you will have to listen to me. And I love singing. Okay. Den första gång jag såg dig, det var en sommardag. På förmiddagen då solen lyste klar. Och ängens alla blommor av många hundra slag. Det stod och bugande i rad vid rad. I'm sorry, I'm very bad singer, I know that. But I can't help it. I was born that way. Rönnerödal vakar i vårljusa natten, sitter i skjortan så tyst på sin bädd, blundar och drömmer att azurblått vatten speglar en skuta på Genuas rädd. Rodnande vinberg slår vakt omkring bukten, gråseglen fyllas av sjöalpens vind. Och den balsamiska Listen, could you help me find a PG accommodation? No, I'm not a city guide. धरती पर किसने लकीरें खींची? किसने बनाई है सरहदें सरजमीनों पर? कागज की कश्तियां कहाँ मानती है पानियों के टुकड़ों को? धरती पर कभी भी कहीं भी कोई भी कवि गाता है तो इंसानियत की लहर उमड़ाती है कायनात पर। और जब किसी योद्धा के घोड़े की हिनहिनाहट गूंजती है तो सिहर उठती है इंसानियत। माउली, आने वाले वक्त में ये कर सको तो कर दो, धरती पर खींची इन लकीरों के जख्मों को भर दो। Rönnerödal vakar i vårljusa nätter, vida han far som i ungdomens år
Hän över Pampas smaragdgröna slätter rider i vall sina oxar och får, reser sitt tält under sydkorsets stjärnor, stämmer gitarren vid syrsornas sång, svävar i tango med svartögda tärnor, sadlar vid midnatt, hans färdväg är lång. Excuse me, Yes? am I lucky? Yes, you are. Thank you. Hello. Yes. This man. I got your mail. Yes. 15 years ago, he married a local woman. Okay, let me check. Thank you. Welcome. Give us 3 working days, okay? Okay. मानव वंश शास्त्र और उत्क्रांत होती कला, ये मेरा विषय रहा है। कला नहीं होती तो इंसान में इंसानियत ही नहीं होती, ये मेरा दावा है। यहाँ के समाज में कलाकारों के लिए स्वतंत्र व्यवस्था नजर आती है। यहाँ प्रतिभा जाया नहीं होने देते। Well, you were looking for a PG accommodation, right? Yeah? All right, I found one. Really? How much will you pay? What's your budget? About half the hotel rent. Half? You do everything in half, right? Yeah. Okay, jump in. But the taxi fare you will have to pay. Need to pick up my luggage, huh? Okay. Come. Come in. Whose house is this? It's mine. Don't worry, it's only me here. I'm alone here. In my country, if you are alone, that is the problem. Huh. This is another one. This okay with you? Yeah, I'm okay with this. Relax. Thank you. By the way, I'm Chris. Oh, I'm Mauli. 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 Maulene. No, Mauli. I call you Molly, okay? Do your socks stink? No? Mine do. Let's have a real nice dinner tonight. How many days do you survive on those cupcakes? What are you doing in Sweden, actually? I'm looking for my father. Yeah.
Everybody's looking for something. On the inside or on the outside. How is it? It's good. Thank you for this. Den första gång jag såg dig, det var en sommardag. På förmiddagen då solen lyste klar. Well, you are in my house, so you will have to let me sing for you. No, that was not part of the deal. I know, I'm a very bad singer. Why are you alone? Who is not alone? You are also alone here. My wife fell in love with someone and she went away. Then I too left with someone. 4 years after our divorce, we met again. And we fell in love again. We started dating again. And this time we enjoyed it even more. She lives in another city, and whenever I have a chance going there with a client, I meet her. Secretly. It's actually thrilling. But what about your children? Oh, they're grown up. They have their own homes now. Sorry to have kept you waiting. Please be seated. So, this man was last located here, but his name is Stephen Newborn, and there is no trace of him since the last 5 years. Whatever information we had is right here. That's all we know. No, he is my father. His name is Nachiket Raukar. Well, that's the best I could do. I have to go here. Why don't you stay a day or two? Later, we might get a customer going that direction. No thanks. You've already helped me enough. I can't take any more help. I need double. Double? When you find your father, you tell him to give you money, and you give me the double. Till then, you keep it. Thank you. I washed your socks so they won't stink anymore. Thank you.
Hey, wait up. This is your shack. Oh, no. No? What do you mean? I don't dance for money. You earned it. Let me at least buy you dinner then. Okay. Okay. Hey guys, she's joining us for dinner. You're really great at dancing, by the way. Thank Are you. you joining us for dinner? Hi, I'm Hi. Fernando. Hi. Ruben. I'm Adam. I'm Mauli. Hi. Some ice? What you eating? You eating ice? Sure you're not gonna drink? No, I don't drink. But we gonna drink. Cheers. Cheers. So what's your story? Where you from? India. So you're a tourist? No. I'm sort of on a personal mission. I'm looking for a place called, Veera Brook. Where's that? I don't know. I don't know either. Do you know? No, I never heard about it. Sorry. No idea. And you guys? What's your story? Well, You yeah, can well, start we're musicians and we just travel from place to place, really. wherever our music takes us. It's like a tour for life. I mean, when we have enough money, we just move further on. So where you wanted to go again? Veera Brook. If you want to go to Vera Brook, let's find out where it is and then let's go, right? Guys, chill. Do you want us to come with you? Yeah, that's okay. All Of right. course. Great. Cheers. रत्ती भर सी जिंदगी बेजान खड़ी है दिन रात के दरवाजे पर। न हिलती है न डुलती है, न चलती है न फिरती है, न जिंदा है न मरी है, न दिन गुजरता है न रातें गुजरती है। बस उजाले बदलकर अंधेरों में ढल जाते हैं और हम आने वाले उस एक दिन का इंतजार करते हैं। कब आता है कल? भयानक अंधेरों की गहराइयों से गुजरती है रात, तब आता है कल। मुझे पूना लौटना पड़ा था, वक्त के हाथों में मजबूर था। मैं उजड़ी आंखों से अपने तबाह होते वक्त को सिर्फ देख रहा था। कितना कुछ जाया हो रहा था मेरे इर्द गिर्द। सबसे बड़ी बर्बादी है वक्त का जाया होना। जो बीत गया वो बीत गया। बीता वक्त, बीती उम्र लौट कर नहीं आती। चाय आई ले लूं उसे? नहीं रहने। अच्छा। माँ उड़ेगी उड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी को क्या हुआ है? आई, इलेक्ट्रिसिटी को क्या हुआ है? आज गुरुवार है ना, लोड शेडिंग है। 10 बजे गई है ना लाइट, 6 बजे तक आ जाएगी। अले अले अले, वो देखो वो देखो। गुड़िया गुड़िया कैसी है? हाँ? टूटी चीजें फिर से नहीं जुड़ती। मैं अपना वक्त, अपनी जवानी, अपने रिश्ते, अपने सपने टूटते देख रहा था।
अनीता और आई दोनों परेशान थे। हम सब परेशान थे। रेत से फिसलते सपनों को जकड़े रहने की बहुत कोशिश की अनीता ने, और मैं जिद पर अड़ा रहा। The problem is not only yours and mine. This recession is problem of the whole world. It's just a phase and it will pass. Do not lose hope and let's not give up. What hope are you talking about? We've got everything at stake. With what face are we going to go back? I'm definitely not leaving from here. और फिर पालखी का दिन आया। मेरे रिसर्च का जो विषय है उसमें पंढरपुर की यात्रा भी शामिल है। साहित्यकारों को ईश्वर का दर्जा देकर उनकी साहित्य रचनाओं को गाते गाते 18 दिन तक चलते हैं वारकरी। साहित्यकारों का इतना सम्मान मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया। मैं भी इस ऊर्जा में शामिल हो गया। चलता रहा भीड़ में, अकेला होकर सोचता रहा। अपने फैसले तक आने के लिए वक्त मिला मुझे। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता अनीता। तुम, माँ, माउली, ये मेरी दुनिया है और बाहर एक दुनिया है। वो मुझसे कुछ और चाहती है, मैं कुछ और चाहता हूँ। मेरा रिसर्च आखिरी पड़ाव पे है। मैंने 7 साल जो मेहनत की है तुमने देखी है। तुम्हारा सैक्रिफाइस मैं कभी भूल नहीं सकता। तुमने बहुत सहा है मेरे लिए। लेकिन ये रिसेशन जो आया है वो पूरी दुनिया के लिए आया है। अगर मुझे मेरा रिसर्च पूरा करना है तो मुझे उसी फर्म के साथ काम करना पड़ेगा और वहां से लोग हटाए जा रहे हैं। 6 महीने गुजर गए, मैं यहां पे आया हूं और मैं पागल हो रहा हूं अनीता। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैंने सपने देखे हैं, उनके लिए मेहनत की है। अब वही लोग उस फर्म के साथ काम कर सकते हैं जिनके पास परमानेंट रेसिडेंसी है, और तभी हम सब एक साथ रह सकेंगे। अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो अनीता। मेरा वहां जाना जरूरी है। मैं वहां जाके एक दूसरी शादी करूंगा, फेक मैरिज, पेपर मैरिज कहते हैं उसे। उसके लिए औरतें भी मिल जाती है, इलीगल सिस्टम ही है वैसा।
हम दोनों डाइवोर्स ले लेंगे। मैं वहां जाके दूसरी शादी कर लूंगा। 1-1.5 साल में मुझे परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी। वापस आके हम दोबारा शादी करेंगे और एक साथ वापस जाएंगे, हमेशा के लिए। अनीता, अनीता, कोई मुझे बताओ घर में क्या हो रहा है? अनीता, हाँ? क्या मातम मचा रखा है घर में? घर में कोई मर गया है क्या? नचिकेत, और भी तो कोई रास्ता होगा। यहां भी तो लोग जीते हैं, यहां भी तो नौकरियां हैं। अपनों से बढ़कर और क्या होता है? तुम नहीं समझोगी माँ। क्या नहीं समझूंगी मैं? तुम्हारी वहां जरूरत नहीं थी, इसीलिए तुम्हें वापस आना पड़ा है। मैं सड़ सड़ कर मर नहीं सकता माँ। जो मैं जानता हूं, जो मैं कर सकता हूं, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, वो छोड़कर जिंदा रहना चाहता नहीं माँ। वो मेरा बेटा है, तुम्हारा पति है। मगर है तो वो मर्द ही। तुम उसे गलत समझ रही हो शायद। शायद यही सही है कि मैं उन्हें गलत समझ रही हूँ। कितना दुर्भाग्यशाली होता है किसी के सपनों का मरना।
अनीता, 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 मैं जा रहा हूं। ये सब क्या है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ अनीता। किसी एक के सपने को तो मरना ही था ना। Hi, excuse me, can I speak to you? Yeah. Hi, my name is Mauli. Can I ask you something? Yes. Do you know this man? Yes. I do remember him. He used to be here around. It was a long time ago. I think the cops took him away. The police? Mm-hmm. What do you mean? He was a thief, apparently. A thief? Where is he now? Well, where do you think they take the thieves? I don't know. You can check with the Stalker authorities, maybe. Maybe they know. Probably in jail. How do you know this guy? I'm his daughter. Ooh. Well, good luck finding the criminal. Guys, Yes? I have to leave now.
I'm so glad that we met. We shared a wonderful journey together. But it's time that I take my own way. It was nice meeting you. Thank you. Yeah, nice to meet you. Thank you. Same here. I really hope you find what you're looking for. Thank you. So we just Yeah, keep let's go. on... Keep on playing. Yeah, let's All go. right. Take everything. Take care. Take care. Yeah. Thank you. Bye. See ya. On the road again! मचल उठता है आसमां, बूंदे फिसल जाती है, खला तो रह जाती होगी। पानियों का झुरमुट बरसता है, पत्ते टूटते हैं शाखों से, खला तो रह जाती होगी। कौन जिंदा है यहाँ? जिंदा तो समय है, कुदरत है, जिंदा तो ज़मीं है, आसमां है। हम तो पुर्जे हैं बस, टिश्यूज, पेशियाँ जो पनपती है, मर जाती है। जिंदगी तो कुदरत जी रही है, हम तो जरिया है उसके जिंदा रहने का। कल नहीं थे, आज है, कल फिर नहीं होंगे। कल हमने क्या किया, ये आने वाले कल से छुपाने की कोशिश क्यों करें? Välkommen till denna soliga onsdag och vigsel mellan Nachikket och Linda. Inför dessa vittnen frågar jag dig, Linda, tager du Nachikket till din äkta man? Ja. Tager du Nachikket Linda till din äkta hustru? Ja. Härmed förklarar jag er man och hustru. My work here is done. I've planted my stuff all over the place. My shoes are there, my clothes. Inside in the bathroom, my undergarment should always be there. They can come anytime. Yeah. To check whether we're actually staying here together or not. This is a fake marriage. You know I cannot stay here with you. So this preparation is for their benefit. So now we meet straight on the day of a divorce. So take care now. Bye. Take care. Yeah. So, everything seems all right? Thank you for cooperation.
I know about your pretending marriage. This is general practice. मेज पर अलमारी की चाबी पड़ी थी। हम किताब उठाकर ले आए। याद है मुझे नीम तले घंटों बैठना। याद है साइकिल के पेडल की आवाज, बोरिंग वाले पंप की दोपहरी खड़खड़ाहट, शाम होने से पहले मस्जिदों के मीनारों से आती आजान। इनमें से कुछ भी यहां सुनाई नहीं देता, मगर याद जरूर आता है। हुजूम सा दौड़ आता है किताबों में छुपे किरदारों का। किताबों ने देखना सिखाया, किताबों ने बोलना सिखाया, सवाल उठाना और जवाब ढूंढना सिखाया, जीना सिखाया, किसी बात पर मर जाना सिखाया। पलटते पन्नों ने पलटते वक्त के नक्शे कदम दिखाए। माँ ने उस वक्त अगर हाथ में किताब ना थमाई होती तो न जाने आज इन हाथों में क्या होता। बर्फ की बूंदों में समंदर का नक्शा ढूंढा है, फिसलते लम्हों में सदियां ढूंढी है। जिंदगी ने अपने रंगों बहारों से लदी अलमारी की चाबी थमा दी हाथ में। उस अलमारी की चाबी पड़ी थी मेज पर। हमने किताब उठाई और चले आए। So, my job is finished. So as per the deal, you got your money. I got my permanent residency. I cannot thank you enough for this. Hey, don't worry about it. I'm just glad that I could help you. Thank you. आती हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? आती हूँ। अनीता, ये लो तुम्हारी महीने की पगार। अच्छा है ना मो? तुमने मेरे एक भी खत का जवाब नहीं दिया। और ये क्या हालत बना रखी है? अनीता, अनीता,
ये क्या पागलपन है अनीता? पागलपन? क्यों कर रही हो ये सब? मुझसे ही ये सवाल है? देखो, जैसे तय हुआ तय था। नहीं हुआ था। तुम चाहते थे और मैंने किया था। तो अब मैं आ गया हूं। तुम्हें, माँ को, माउली को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तो जैसा तुम चाहो वैसा हर बार नहीं हो सकता। वो एक प्लान था। मुझे इस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनना है। षड्यंत्र? अपनी तरक्की के लिए तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं लेकिन उस औरत का भी इस्तेमाल किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो एक फेक मैरिज था। शादी फेक होती है? हाँ, होती है। और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं दोबारा तुमसे शादी करूं? अनीता, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम अपनी तरक्की की राह पर चले जाओ। मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगी। अगर तुम्हारी माँ चाहे तो वो तुम्हारे साथ जा सकती है। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अपनी बेटी को मैं जाने नहीं दूंगी। सोच लो अनीता। सोच लिया। थैंक्स। This man wasn't a thief. He was falsely accused of a crime and was deported. We cannot provide details of his arrest and deportation. You can find out about his whereabouts at the deporting center. I'll talk to them so they can help you. Thank you. Welcome. चलूं मेमो? अच्छे से रहना। हेलो अनीता, अनीता मैं यही हूं। नोवाटेल में रुका हूं अभी। सोच लो अनीता, अब भी वक्त है।
होटल में रह रहे हो। घर है हमारा। उस घर में मेरी जगह नहीं है माँ। अपने हाथों से कर लिया है तुमने सब। चल घर चल। घर तो मैं भी चाहता हूं। वो मान जाए तो आ जाऊं। तो तुम मना लो, तुम्हारी अपनी है वो। मैंने कहा उसे अपना रहने दिया। किस चीज के पीछे दौड़ रहे हो नची? दौड़ चुका हूं मां। अभी भी वक्त है। मैं वक्त का इंतजार करूंगा। उसे समय लेने दो, उसे संभलने दो। क्यों जिद कर रही हो? जिद नहीं, मेरे आत्मसम्मान की परीक्षा है। आत्मसम्मान? क्या पाओगी उससे जब सब कुछ खो रही हो तुम? आत्मसम्मान खो गया तो बचता ही क्या है? कहाँ जा रही है आप? अपनी बेटी के घर? अपने जमाई के दरवाजे पर जाकर खड़ी होंगी आप? आपका बेटा घर छोड़कर चला गया है, मैं जिंदा हूं। ये आपका घर है, आप यहीं रहिए। पराई तो मैं हूं, बाहर से तो मैं आई थी ना। जाना ही है तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने रिश्ता तोड़ा है, जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। हमेशा भागती रही हैं आप। जैसे ही घर में मुसीबत आई, आप घर से मंदिर भाग गई। ये आपका जय 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 करना, ये भी एक नशा है, नशा। और इसी नशे में आप अपने आप को सवालों से बचा रही हैं, बस। हो सकता है कि इस वक्त मुझे आपकी जरूरत हो। वक्त के पत्थर पर उम्र को घिसकर चंदन सा महकता रहे ये जन्म, यही कोशिश थी मेरी। 2 घूंट जहर आया हमारे हिस्से में। अनीता अपना और मेरा दोनों पी गई। ले लो। मर जाओगी। मैं भी वही चाहती हूँ। जिद, बस जिद। इसी जिद से पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है तुमने। तो ऐसी जिंदगी का खत्म हो जाना बेहतर है ना? मन करे तो ले लेना। आई माउली के साथ मेरे गहनों का डिब्बा भेज दीजिए। ठीक है।
खत है। तुम्हारे बाबा के भेजे हुए। इसका जवाब मुझसे नहीं दिया गया। तुम बड़ी हो जाओगी ना, सब जान जाओगी। इसके सिवा तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। चूड़ी और मंगलसूत्र पहनाना है क्या? ले जाओ ऐसे ही। वो मुस्कुराहट मेरा पीछा नहीं छोड़ती बाबा, जो पानी पर नाव छोड़ते वक्त मैंने आपकी आंखों में देखी थी। आपका चले जाना मैंने उस वक्त महसूस किया जिस दिन माँ चली गई। Hello, you can come with me. मैंने करीब से देखा है माँ का मरते मरते मर जाना। मैं उसी दिन बड़ी हो गई जिस दिन माँ चल बसी। उसने लोगों के घर रोटियां बनाकर दिन गुजारे, मगर आपके भेजे पैसों का सहारा नहीं लिया। और उसके चले जाने पर आपका ना आना, ये जो अभी मेरे सामने है, इससे भी मजबूत दीवार कैसे बन जाती है नाजुक रिश्तों में बाबा। इस दीवार के उस तरफ हमारी मुलाकात जरूर होगी। मैं आपसे मिलने आई हूँ बाबा। आई एम लुकिंग फॉर दिस मैन. His name is Nachiket Raukar. He was last located here. He's my father. I need to know where he is. Okay, I'll check. This man, Stefan Nyborg, was here, but his wife, Linda Nyborg, came and we let him go. These are copies of his documents. Molly? Molly? How do you know my name is Mauli? I've heard your name more than mine. Come. Fick du ordning på beställningarna? Ja, det gick bra. Åh, gud vilken tur.
I run this place. I live upstairs. Nice. Baba? I'm Linda. Maybe you heard about me? I knew you would come one day. Please take me to my father. I can't wait anymore. I will, in the morning. It's late and you look very tired. I think you should rest a little bit first. You know, your father had great respect for your mother. We got married. I did many fake marriages for money. And we both got caught. Your father was sent to a deportation camp. I went there to get him out. And after that, we lived together. He was the only real gentleman I met. He was a very, very good man. Your father was turned out of university, and he couldn't complete the research that he did all this for. Life became meaningless, and times became very difficult for both of us. सीने में यूं हुआ जैसे माचिस की तीली जली हो अंदर। कमीज का बटन टूटा, सीने से कूद कर खुद को दौड़ता देखा मैंने। फिर नासमझ बच्चे की तरह तुम्हें ढूंढता रहा। कैसे समझाऊं मैं अपने आप को कि तुम नहीं, तुम्हारी याद आई है अनीता। I will make a nice bed for you. Yeah, just give me, a little time. I'll be there. He loved you so much. He named many things after you. Trees, benches, animals, whatever was dear to him, he called it Molly. Then he got very tired. Your father is there. Huh?
It's been 3 years. Then who's been writing me letters? This is from your father. He missed your mother very much. He never got the chance to give it to you. He's written letters for you for the next 20 years. Molly, you will never be alone. You have a brother. He's studying in a boarding school. Please go and meet him before you go. The address is here. पगडंडी के उस छोर पर आम का पेड़ था। दो नन्हे हाथ सींचते रहे। बहारों का मौसम आने को था। माली ने पेड़ ठेके पे दे दिया तो मासूम आंखें हसरत से देखती रही और मौसम गुजर गया। पगडंडी के छोर पर आम का पेड़ है। दो नन्ही आंखें अब भी सींचती है।
For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies. Click on the bell icon to get regular updates from Venus.